Hello everybody, I'm Sia. Thank you so much for watching my videos. Welcome back to my channel. So today what are we going to do is we are going to continue with our chapter The Necklace of Book Footprints Without Feet, class 10 English. So in our previous part of this chapter we did that Mrs. Loisel was not able to find the necklace which she borrowed from Mrs. Frostier, her wealthy friend. So her husband tried everything to find that necklace back and get that necklace back, and he also approached the police and put up an advertisement in the newspapers offering a reward, but all his efforts went in vain to find the necklace. So, with no options left, Matilda's husband asked her to write a letter to Mrs. Frostier and mention that the clasp had broken and she would return it once it paid. So, Mrs. Loisel's husband, who was a clerk, advised her wife to write her a letter, to write her friend a letter that the clasp had broken. Clasp is a part of a necklace which had broken, and they want some time and to return it. Fine. So, in the meantime, they had successfully found a replica or a duplicate of the necklace and decided to replace it with the old one. So, let me tell in Hindi. So, अब क्या था कि उन्होंने बहुत कोशिश की नेकलेस ढूंढने की जो खो चुका था, बट अब कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उनके सारे के सारे एफर्ट्स ऑल वेंट इन वेन, मतलब सारे के सारे एफर्ट्स उनके बेकार चले गए थे. सो व्हाट डिड दे डू? जो मटिल्डा के हस्बैंड थे क्लर्क, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला, मिसेस लॉयसल को, कि तू एक काम कर, अपनी वेल्दी जो उसकी रिच फ्रेंड थी जिसने उसे डायमंड नेकलेस दिया था, एक काम कर तू उसको बोल कि जो क्लैस्प है, एक पार्ट होता है नेकलेस का, वो टूट गया तो हमने उसको रिपेयरिंग के लिए दिया, और जब वो ठीक हो जाएगा तब उसको रिटर्न कर देंगे. अब जो इन्हें टाइम मिला, इन द मीन टाइम इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डुप्लीकेट ढूंढ लिया उसी नेकलेस का. एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो उस नेकलेस को, जो अब उन्होंने उसका डुप्लीकेट ढूंढा है नेकलेस का, जो गुम गया नेकलेस, उसको रिप्लेस कर देंगे. हाउ एवर द न्यू नेकलेस वॉज वेरी एक्सपेंसिव. सिंस इट वॉज अ डायमंड नेकलेस, इट वॉज एक्सपेंसिव एंड कॉस्टेड 36,000 francs. Matilda's father in law had left 18,000 francs for his son. They decided to borrow the rest of the money to buy the expensive necklace. They thought they bought the necklace with all the money they had and borrowed funds. अब जो necklace था, जो उन्होंने ढूंढा था डुप्लीकेट, it was very expensive because it was a diamond necklace and it costed for 36,000 francs. अब उन्होंने कैसे इंतज़ाम किया इतने सारे पैसों का? अब जो मटिल्डा के फादर इन लॉ थे, उन्होंने 18,000 फ्रैंक्स की कोई अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी थी उनके सन के लिए, जो क्लर्क थे. और उन्होंने क्या किया, पहले तो उस 18,000 फ्रैंक्स की जो वो प्रॉपर्टी थी उसको सेल किया, एंड देन उन्होंने, और जो बाकी का रेस्ट ऑफ द मनी थी, दे बोरोड टू बाय दैट एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस. दे बॉट द नेकलेस विद ऑल द मनी दे हैड एंड बोरोड फंड्स. उन्होंने बंड भी जो फंड्स थे और बोरो किया. इसी तरीके से उन्होंने पैसे जुटाए इतनी तकलीफ़ों से और डायमंड नेकलेस खरीदा, एंड दे रिटर्न्ड इट बैक टू देयर रियल ओनर, दैट इज मिसेस फॉरेस्टियर. In the next few years, their condition worsened as their lives took a drastic turn due to huge loan. Now, I just told you that firstly they sailed out the inheritance, and then they took a loan of 18,000 francs to buy that diamond necklace. So, to repay that huge loan, their condition worsened and worsened and worsened. To repay that loan, दे मूव्ड टू अ स्मॉलर प्लेस टू लिव इन. फाइन, पहले वो बड़े घर में रहते थे और अब उन्हें क्या करना था, अब उन्होंने 18,000 फ्रैंक्स का लोन लिया था इतना बड़ा, तो अब लोन चुकाने के लिए उनको बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे. सो व्हाट डिड दे डू? दे मूव्ड टू अ स्मॉलर प्लेस टू लिव इन, एंड मटिल्डा डिड ऑल द हाउस कोर्स बाय हरसेल्फ. हर हस्बैंड वर्कड ऑड आवर्स इन मल्टीपल जॉब्स टू रीपे द लोन. उन्होंने जो उनकी मेड्स थी वो हटा दी, छोटे घर में शिफ्ट हो गए. उसके हस्बैंड जो था ऑड आवर्स में काम करने लगा, बहुत सारी जगह काम करने लगा ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके. 10 years passed, मतलब ऑलमोस्ट अ डिकेड पास्ट, एंड विद दैट देयर appearances also changed due to extreme workload. अब उनके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड आ गया कि उनकी अपीयरेंस भी चेंज होने लग गई. वन डे अपीयरेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपीयरेंस हियर? दैट दे
started looking older. They started looking older than their age. One day, Matilda met Mrs. Frostier, who couldn't identify her as she looked weary and aged. अब जो क्या थी, मिसेस लॉयसल पहले कैसी दिखती थी, बहुत सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी, क्योंकि उसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ था, जस्ट टू लुक रिच. फाइन. अब इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया, जब एक डिकेड में इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया, दैट आई टोल्ड यू, जस्ट टोल्ड यू, दैट शी, you know, she began to look older than her age. Fine. And one day, when Mrs. Frostier saw Mrs. Loisel, she couldn't identify her as well, as she looked weary and aged. Mrs. Loisel revealed that the truth. Mrs. Loisel then revealed the truth to her friend, how she and her husband were left in ruins for repaying the loan of the expensive necklace. अब जब मिसेस फ्रॉस्टियर ने पूछा मिसेस लॉयसल से कि अरे तू तो इतनी सुंदर दिखती थी, यू वर वेरी ब्यूटीफुल एंड नाउ यू आर लुकिंग सो वेरी एंड एज, एंड दैट्स व्हाट्स द रीजन बिहाइंड योर अपीयरेंस, बिहाइंड योर सच अपीयरेंस. तो मिसेस लॉयसल देन रिवील्ड द ट्रुथ टू हर फ्रेंड कि कैसे उसने और उसके हस्बैंड ने इतना एक पूरी डिकेड इतना सैक्रिफाइस किया जस्ट टू रीपे द लोन विच दे बोरोड टू बाय दैट एक्सपेंसिव नेकलेस फॉर हर. फाइन. एंड आफ्टर हियरिंग दिस मिसेस फ्रॉस्टी वॉज स्टन्ड. वो हैरान हो गई बहुत ज़्यादा, मिसेस फ्रॉस्टी, एंड टोल्ड हर दैट द नेकलेस दैट शी गेव हर फॉर द बॉल पार्टी वॉज अ फेक नेकलेस दैट वॉज वर्थ नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स. देन अब जब इसने बताया, मिसेस लॉयसल ने, कि हमने इतना महंगा नेकलेस खरीदने के लिए इतना लोन लिया, देन वी डिड अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस, देन वी आर नाउ एट दिस एज दैट यू आर नॉट इवन एबल टू आइडेंटिफाई अस. सो उसने पूरी कहानी बताई. देन अब इसमें एक ट्विस्ट आता है बहुत अच्छा सा, कि जो मिसेस फ्रॉस्टियर थी उन्होंने बताया, शी वॉज स्टन्ड आफ्टर हियरिंग दिस एंड शी टोल्ड दैट इट वॉज जस्ट दैट जो हमारी मिसेस लॉयसल थी वो समझ रही थी कि वो डायमंड नेकलेस है, बट इट वॉज नॉट अ डायमंड नेकलेस, बल्कि वो क्या था, इट वॉज जस्ट अ फेक नेकलेस दैट वॉज वर्थ नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स. कितने का था वो? नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा का नहीं था. बट मिसेस लॉयसल एंड हर हस्बैंड गेव मिसेस लॉयसल अ डायमंड नेकलेस दैट कॉस्टेड फॉर 36,000 francs. So, what is the conclusion of chapter necklace? The chapter necklace focuses that one should be content, that is satisfaction. One should be satisfied with their belongings and not crave for expensive items that are not within their economical capabilities. अब नेकलेस जो चैप्टर है उसका कंक्लूजन क्या है कि हर किसी को अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड रहना चाहिए, कि उन्हें जितना भी मिला है उससे उसमें खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, और कि उसको एक्सपेंसिव आइटम्स की उसे ग्रीड शो नहीं करनी चाहिए, उसको अपनी इकोनॉमिकल कैपेबिलिटीज़ को देखकर ही क्रेविंग रखनी चाहिए. बट नॉट अनलाइक मिसेस लॉयसल. Fine. Extreme desires for lavish items leads to unhappiness and loss of peace of mind. अगर हम इतनी ज़्यादा desires रखेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा अनहैप्पी रहेंगे अपनी कंडीशन के ऊपर, और जो हमारा पीस होगा, हमारा जो पीस ऑफ माइंड होगा, इट विल ऑलवेज बी लॉस्ट. So that's all for this chapter, and if you haven't understood anything, then please comment down below. I'll try to resolve every query of yours. And yes, please like this video if you found this video helpful, and please subscribe to my channel. Please share it with your friends, and until my next video, please stay tuned. Then bye.